Hey friends, welcome to day 9 of our vocabulary series wherein we bring you 3 advanced English words which will help you to take your English to the next level. So what we are waiting for? Let's start. So the first word in today's vocabulary series is circumspect. 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 Circumspect is an adjective and it is used when a person is careful to consider all circumstances and possible consequences. जब कोई इंसान किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, वो जिस काम को करने वाला है उस काम को बहुत ही सावधानी से करता है, उस काम के सारे फ़ायदे नुकसान इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करने के बाद वो उस काम को करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो पर्सन एक सर्कमस्पेक्ट बिहेवियर दिखा रहा है. Let us see those words which means the same as circumspect. Cautious, alert, vigilant, observant, prudent. Let us understand the meaning of the word circumspect more clearly with the help of few sentences. Rahul is very circumspect when dealing with strangers. The governor was usually circumspect when dealing with the media. So, the next word is smitten. 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 Friends, the word smitten is used as an adjective. Smitten means having suddenly started to like or love something or someone very much. फ्रेंड्स, जब कोई चीज़ या कोई इंसान एकदम से आपको पसंद आने लगता है, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप उस इंसान से या उस चीज़ से स्मिटन हो गए हैं. फिर वो पर्सन या वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई गेम हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, या कोई ड्रेस हो सकती है, या फिर कोई एक्टर हो सकता है. So friends, now let us see few words which means the same as smitten. Bewitched, captivated, carried away. Here are few sentences which will help you to understand the meaning of the word smitten more clearly. The actor is smitten with publicity. As soon as Sam saw Meera, he was smitten by her beauty. Today's last word is Forte. 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 Forte is a noun and it means a thing at which someone excels. So friends, आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करते हैं, आपकी जो भी स्पेशलिटी है, आपका जो भी टैलेंट है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आपका फोर्टे. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग गिटार इज़ माई ब्रदर्स फोर्टे. दैट मीन्स मेरा ब्रदर गिटार बजाने में बहुत ही टैलेंटेड है. Let us see few more examples. Cooking has always been his forte, so he took up the job of a chef. Music is my forte. I'm very passionate about it. Okay friends, that's all for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you like the video, don't forget to hit the subscribe button to get more videos like this. Now, we will meet tomorrow in the next video. Till then, bye bye.